With a few modifications on lipstick application, we can get fuller and pouty lips. Start by moisturizing your lips. I personally use a lip liner before applying any lipstick. So इसमें आप उतना overline कीजिए जितना आपको ज़रूरी लगे to balance your lips or to give that pouty effect to your lips. I'm a fan of ombre lips, so I start by using a darker lip color on the outline. This additional layer of lip color with the lip liner is also very important to make your lipstick very long lasting. So आप कुछ भी खाइए कुछ भी करिए, the lipstick is going to stay because it has a base, a proper base of the lip liner. I started outlining my lips with a dark brown color, and now if you see, I'll switch over to fill the center of my lips with this maroonish shade, and this step is totally optional. मुझे वो इसका टोटल इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है. अब इसके बाद जब मैं थर्ड स्टेप करूँगी सो you'll see the final result. So this is optional, आप सेम कलर भी कर सकते हैं या फिर आप अपने लिप ग्लॉस से या लिक्विड लिपस्टिक से मैचिंग लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम रिमूविंग ऑल द एक्सेस प्रोडक्ट फ्रॉम माई वॉन्ड. This is my favorite liquid lipstick from MAC Cosmetics, and I've used a lighter, very light shade. It's kind of a nude shade, but when I mix it with a base of darker color, I get a beautiful and a desired shade of my choice. So ये बिल्कुल optional है. आप कलर्स मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आपको हर कलर की लिपस्टिक लेनी है. And I'll just create that ombre with a touch up from the maroon lipstick, and if you see, there's a shading on the lips, on the outer corners, a red shade. So I generally love this. Now to highlight your cupid bow, just use some highlighter. You can also do this step before applying the lipstick.